Hi guys, I'm Dr. Nirmal. Welcome back to my channel Doc Talk. Hi guys, this is the second part of the video in which we were discussing the delay in the NEET PG counseling. So in that part we discussed the chronology in which NEET PG counseling is put on hold, and now in this part we will be talking about the response that is given by the junior residents and the aspirants and the different resident doctor associations to the delay, as well as we will be discussing how the delay of the NEET PG counseling will going to impact on the exam of NEET PG 2022, which is on 12th of March. Now let's talk about the response on this. Now what response came is that all the JRs, okay, which are like working like, I don't know, working miraculously from last 2.5 years in their JR ship, okay, they are handling the hospitals right now with 2/3 of the what we say workforce. Okay, if any medical ward has 15 JRs in total, first, second, and third years, they are working on a 2/3 of the capacity, that is 10 JRs. Where 15 JRs should be required, they are only 10 JRs, and the problem is the cases are increasing, and there are a lot of cases other than COVID which comes to so many ward, be it medical or surgical ward, and if the workforce is 2/3, of course no one can gonna hire new JR, non-academic JRs for their work. So they will, the JRs who are doing already 2.5 years of work in this COVID situation, will be pressurized to again work for so many months. Okay, we are already 3 months delayed. Okay, so the thing is, we have to think of them. So basically, if the government didn't think of them, the Supreme Court didn't think of them, they came up with the response. Now what does response is? The United Resident Doctors Association of GMCH Chandigarh issued this notice on 26th of November. That is on 27th of November, that is today, they are going to put on strike for 2 hours from 10 a.m. to 10 p.m., 12 p.m. to gain the attention to the decision makers who of the country to expedite the hearing process of counseling for 2021 batch to join the workforce ASAP. And they have written this, that no emergency service will be hampered. Okay, so they are not going to affect any emergency services, but they are going to stop the OPD services from 10 a.m. to 12 p.m. This is their first response. Then other organizations like FIMA and state RDAs are basically resident doctor associations of different states, have a joint plan. What does that plan say? Is that in on 26th of November, that is yesterday, the national level SURD and JDA meeting will happen, and they will decide about an indefinite strike from Monday. Okay, so they are planning on an indefinite strike. On 27th of November, they will be wearing black badge protest at work, and on evening there will be a candle march. I will be sharing some pics of that because it has happened. Okay, on 29th and 30th November, they will be giving a token of strike by RDAs and JDAs, and on 1st of December, they'll be going on indefinite nationwide shutdown of OPD services. Then same has happened from Indian Medical Association headquarters, Junior Doctors Network. Okay, same for expedite NEET PG 2021 counseling, and same has happened from National Medicos Organization, again for the counseling, and another organization called FODA, which is Federation of Resident Doctors Association India, has also given a press release in which they are saying that the counseling should be proceeded on urgent basis, because it is an emergency situation. The healthcare workforce in not even just one state, it is a nationwide problem, that all the medical colleges, be it private or government medical colleges, are working on a 2/3 workforce. 2/3 वर्कफोर्स. ओके, ऑलरेडी इंडिया में इतने कम डॉक्टर हैं, उसके ऊपर अगर तुम 2/3 वर्कफोर्स पे काम करोगे तो क्या ही होगा यार. और ये चीज इनको सोचनी चाहिए. इनके लिए वोकेशंस आर वे मोर इम्पोर्टेंट देन डॉक्टर्स को जस्टिस देना. ओके, सो दीज आर फ्यू पिक्स. ओके, like this one here, doctors are joining up, grouping for the protest. Okay, like this here, a doctor is having a board saying stop injustice.
there is candle march saying LLRRM Medical College Meerut, resident doctors are not donkeys, NEET PG counseling 2022-21. Even any doctor who is working in the medical field is treated like a donkey, but we are not donkeys. Okay, and another picture of candle march. Okay, now if you say what all of this is giving us, okay, इससे क्या मिल रहा है हमें? इनसे हमें मेन चीज मिल रही है, दैट इज होप मिल रही है। बिकॉज हम जो केस चल रहा है वो भी एक जरूरी केस है। ओके, ऐसा नहीं है कि उससे वो गलत है, उसका वर्डिक्ट आना भी जरूरी है। बट जो डिलेज हो रहे हैं, मतलब अगर हमें जस्टिस ही नहीं मिल रहा है तो हाउ कैन वी से कि सही हो रहा है? जुडिशरी का क्या फायदा, डेमोक्रेसी का क्या फायदा? ओके, सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट हमें जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, और वो भी जल्दी चाहिए। जल्दी भी हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि एक दिन में दे दो। ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं केस को चले हुए। ओके, 2 महीने से ज्यादा ही हो गए, वैसे तो ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। एंड तो नेक्स्ट हियरिंग है वो तो 3 महीने बना देगी इसको। एंड उसके बीच में जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि वर्कफोर्स इतना कम हो गया, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो भी हियरिंग हुई है वो सारी ईडब्ल्यूएस को लेके हुई है। एंड ईडब्ल्यूएस पे भी दे आर रिवाइजिंग द क्राइटेरिया। ओके, उसके लिए उन्होंने 4 हफ्तों का टाइम दिया टू रिवाइज द क्राइटेरिया, एंड उसकी वजह से काउंसलिंग डिले हो गई है। सो बेसिकली बनता केस में सब जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है कि एक होप जनरेट हो गई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशंस विच इज प्रेजेंट इन एवरी स्टेट, एंड देयर इज वन IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. They are grouping up to support the aspirants who are like helpless and sitting at their homes and wants to join the workforce, and then they are helping the JRs who are already in the workforce and working with 2/3 of the workforce already. They are feeling like इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है फॉर डूइंग द वर्क। अब 3 लोगों का काम 2 लोग कैसे कर सकते हैं? ये भी तो सोचना चाहिए इनको। ठीक है, हाँ वो जरूरी है कि यू हैव टू गिव द जस्टिस टू द OBC एंड द EWS कैंडिडेट्स और द UR कैंडिडेट्स, बट द प्रॉब्लम इज उसकी वजह से कितनों लोगों को सफर करना पड़ रहा है। ओके, सो वी हैव टू कम विद वर्डिक्ट एज सुन एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ गिविंग डेट्स लाइक bizarre dates like of 6th January. They should have given it maybe 1st December or nearby date. Okay, and then if they want to exercise the EWS, they can do it later. That's my point. Okay, but again, I'm not the right person to talk about the reservation here. Neither I want to talk here. I just want to give the chronology why it got delayed and what is the next proposal that it can happen. And if someone is waiting for the answer that अगर ऐसा होगा, let's see कि अगर इससे कुछ फायदा नहीं होता है, अगर ये नेशन वाइड स्ट्राइक भी होती है, स्टिल सुप्रीम कोर्ट 6 जैन को ही हियरिंग सुनती है, तो भी ऐसा नहीं होगी काउंसलिंग नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगी। ओके, बिकॉज आई एम टू श्योर कि उस दिन भी हमें डेट ही मिलेगी, हमें अगले दिन डेट मिलेगी। एंड डेट कुड बी एनी वन, लाइक 16 जैन भी मिल सकती है, 10th जैन मिल सकती है। दे कैन गिव इवन 26 जैन की रिपब्लिक डे के बाद आना। ओके, कुछ भी दे सकते हैं वो, 26 जैन भी बोल सकते हैं कि आफ्टर 26 जैन हम हियरिंग सुनेंगे, अभी रिपब्लिक डे की छुट्टियां शुरू होने वाली हमारी। सो आई डोंट नो, अगर लेट्स से अगर 6 जनवरी को हियरिंग का वर्डिक्ट आ जाता है, तो काउंसलिंग माइट स्टार्ट फ्रॉम 10th of Jan, which will take 2 months, which is around 10th of March. So there is a very, very big chance that the exam which is on 12th of March will get postponed. But okay, so 12th of March के एग्जाम के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि 12th of March का जो एग्जाम है उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन होंगी, वो जनवरी मिड में ही शुरू हो जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली हो जानी चाहिए। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही तो जनवरी मिड में, तो यू कैन लाइक एज्यूम कि 12th मार्च का एग्जाम जो है वो डिले ही होने वाला है। उससे पहले ही नोटिस आ जाएगा अगर 6 जनवरी तक ही हियरिंग चली गई। बट फॉर नाउ, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, डू नॉट थिंक कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। अपनी पेस बना के रखो, अपना सिलेबस करते रहो, अपनी क्यू बैंक सॉल्व करते रहो, और भूल जाओ कि 12th मार्च को एग्जाम पोस्टपोन हो भी सकता है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई गेस. So we all are very frustrated, our GRs are very frustrated, and it's a very good I say
information that they are going on a strike to put the counseling on urgent basis, the counseling proceedings on urgent basis. I by the medium of this video, I'm thanking all the JRs and all the resident doctor associations who are helping the aspirants to get into the workforce. Thank you.